Good morning, everyone. Am I audible? Okay. See, now I'm seeing the chats of Division B. So, Division A students, please unmute yourself and ask if you have any queries. Okay. So, we'll continue with the Cayley-Hamilton theorem. So, what is Cayley-Hamilton theorem? That day we have started with every square matrix satisfies its own characteristic equation. That is the Cayley-Hamilton theorem. We have seen that in the previous lecture. So every square matrix satisfies its own characteristic equation. So what is a characteristic equation? In general, a characteristic equation is calculated by determinant of A minus lambda I equal to 0, where A is the square matrix which will be given to us, lambda is the scalar, and I is a unit matrix or identity matrix of the same order. So every square matrix satisfies its own characteristic equation. So first our aim is to calculate the characteristic equation. In general, the characteristic equation is given by determinant of A minus lambda I equal to 0. But for a 3 by 3 matrix, it can be got from this formula. So lambda cube minus sum of the diagonal elements of A into lambda square plus sum of the minors of the diagonal elements of A into lambda minus determinant of A equal to 0. Okay, so in general, the characteristic equation is got by this equation, but if you are given a matrix of order 3, that is 3 rows and 3 columns, then we can calculate by using this formula. So we'll continue with the Cayley-Hamilton theorem problems. We have done 3 problems in the previous lecture. We'll continue with this. First example. Apply Cayley-Hamilton theorem to A is equal to 1 to 2 minus 1, and hence deduce that A raised to 8 is equal to 625i. Yes, DSC students, I'm just, you will understand when I do the problems, you will understand this topic, and in the next topic, you will understand the topics we have done in the previous lecture. So don't bother about that. You just pay attention to this topic here. You will follow. Okay? DSC students, not a difficult topic, you will understand. Yeah. So what we have to do is, we have to apply Cayley-Hamilton theorem to A. The first step is calculate the characteristic equation of this matrix. As we are given 2 by 2 matrix, we have to apply the direct formula for calculating the. Yes, I know it is the first lecture of DSC students, but you will understand this topic. Okay, it's not a continuation of the previous. I've included all the basics in that. Don't worry about that. Just pay attention. You will understand. So don't think it is a new lecture. You will not understand. You will understand. Just pay attention what I'm telling. Okay. Yeah. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? We are given a matrix of order 2. So first is we have to calculate the characteristic equation. In the first step will be to calculate the characteristic equation. To calculate the characteristic equation, we have to form the matrix A minus lambda I. ठीक है, A दिया हुआ है क्वेश्चन में, A minus lambda I का डिटर्मिनेंट निकालना है. सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे. तो सबसे पहले A लिखेंगे. तो we have A as 1 2 2 minus 1
minus lambda into I is the unit matrix 1 0 0 1. ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको लेके a minus lambda I का मैट्रिक्स निकालना है. So we have got a minus lambda I is 1 2 2 minus 1 minus lambda. Now we know that I've shared the screen. What about others? I've already shared the screen, Sally. Just check the network at your end. Screen is visible, na? Yeah. Yes. So, Sally, please check your network. Maybe your network is slow or something. Just check that, okay? It's visible because even I am logged into different login. Okay. तो ठीक है, सबसे पहले a minus lambda I निकालना है. A is the given matrix, lambda is the scalar and I is the unit matrix. अगर हमें दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा. तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो व्हाटएवर इज ए मैट्रिक्स, लैम्डा विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and minus 1. So we have 1 minus lambda, 2 2 and minus 1 minus lambda. Now what we have to do is find the determinant of this. First step is writing a minus lambda I matrix. जब a minus lambda I लिखेंगे तो जो भी diagonal element है वहां पे minus lambda subtract हो जाएगा. उसके बाद determinant of a minus lambda I equal to 0. This is the characteristic equation. So what we have to do is just open this determinant. कैसे ओपन करते हैं, this into this minus 2 into 2 equal to 0. So open the determinant and find the characteristic equation. तो ओपन किया तो 1 minus lambda into minus 1 minus lambda minus 4 equal to 0. ठीक है, सबसे पहले केली हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है. And the characteristic equation is got by determinant of a minus lambda I equal to 0. So since it is a 2 by 2 matrix, we have to open this determinant. So this into this minus 2 into 2 equal to 0. Open the bracket again here and get a quadratic equation in lambda. Okay? Open this bracket and get a quadratic equation in lambda. So what do we get? Just open this bracket. 1 into minus 1 minus 1. 1 into minus lambda minus lambda. Minus lambda into minus 1, that is plus lambda. And lambda minus lambda into minus lambda, which is lambda squared minus 4 equal to 0. Just opening the bracket. Simplify this again. So we have lambda squared. This lambda and lambda will get cancelled. Minus 5 equal to 0. So we have the characteristic equation as lambda square minus 5 equal to 0. ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स का प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है. उसके लिए a दिया रहेगा, I we know, तो सब्स्टिट्यूटिंग इन a minus lambda I, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इक्वल टू 0 करना है. Open the determinant and simplify, you will get the characteristic equation. So the characteristic equation is lambda square minus 5 equal to 0. Or now Cayley-Hamilton theorem states that every square matrix satisfies its own characteristic equation, which means that this is the characteristic equation. Every square matrix का मतलब जो भी A matrix है वहां पे सिर्फ lambda के बदले A substitute करना है, the answer will be equal to 0. So from Cayley-Hamilton theorem, if I replace lambda by A, I'll get A square minus 5, because when you have a matrix, you cannot have a number here. That is equal to 5 into I equal to 0. So we have a square minus 5I equal to 0. So this is the characteristic equation, and from Cayley-Hamilton theorem, whatever is your lambda, replace lambda by capital A on the matrix. तो lambda के बदले A put करना है, तो we will get a square minus 5I equal to 0. ठीक है? Now from this we have to get a raised to 8 is equal to 625I. ठीक है? तो हमारे पास है a square minus 5I equal to 0 from Cayley-Hamilton theorem. Now we have to get a raised to 8. अगर मैंने इसको एक साइड में रखा तो I will get a square equal to 5. Square both the sides, तो कितना हो जाएगा? A raised to 4 equal to 25I. Again square once more.
तो क्या हो जाएगा, a raised to 8 is equal to 625. Simple problem. You don't have to do any calculation. Okay? You have to do. You need not divide. In the previous lecture, we have divided and shown that. So now we need not divide it. हमें क्या करना है? First aim for any matrix problem, the first step will be to calculate the characteristic equation. Okay, the first step we are calculating the characteristic equation and then replacing lambda by a. That is the Cayley-Hamilton theorem. जो भी characteristic equation है उसमें lambda को a put करना है. So we get a square equal to 5i. Our aim is to prove a raised to 8. So we are squaring 2 times and getting the required result. ठीक है? The simple problem. Yeah. Squaring, nahi, when you have a power a raised to 4 whole square, okay, it gets multiplied. a raised to 4 को तुम 2 बार लिखो, a raised to 4 into a raised to 4, okay, तो फिर 4 plus 4 8 हो जाता है. Clear? Understood now how to calculate the characteristic equation? Diploma BSc students, clear? Little bit, थोड़ा समझ में आया? कौन सा? Which one? ए स्क्वायर, ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमें केली हैमिल्टन थ्योरम में क्या होता है ना, लैम्डा के बदले ए रिप्लेस करना होता है. ठीक है, जो भी तुम्हारा इक्वेशन है उसमें लैम्डा के बदले ए पुट करना है. तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर. यहाँ पे 5 है क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो 5 अकेला नहीं है, इसके लिए 5 है तो आई लिखना पड़ता है, कांस्टेंट के साथ एक आई लिखना पड़ता है. सो ए स्क्वायर माइनस 5i इक्वल टू 0. फिर इसको मैंने ये साइड लेके ए स्क्वायर इक्वल टू 5i. क्लियर नाउ? कौन सा सेकेंड स्टेप? ये वाला. हाँ, ए दिया हुआ है, ठीक है, माइनस लैम्डा. आई क्या होता है? 1 0 0 में. ये मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2. यूनिट मैट्रिक्स आल्सो शुड बी ऑफ ऑर्डर 2 by 2. अभी तुम एक मैट्रिक्स को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, लैम्डा को अंदर लेना है तुम्हें पहले. तो क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा. पहले लैम्डा को अंदर लेना है. उसके बाद अगर फर्स्ट एलिमेंट दोनों का लेना है उसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो 1 माइनस लैम्डा, मतलब 1 माइनस लैम्डा इंटू 1, दैट इज 1 माइनस लैम्डा. 2 माइनस लैम्डा इंटू 0, दैट इज 2. माइनस 2 माइनस लैम्डा इंटू 0, दैट इज 2. माइनस 1 माइनस लैम्डा इंटू 1, दैट इज माइनस 1 माइनस लैम्डा. जब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं दो मैट्रिसेस को तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है. ठीक है, तो पहले हमें लैम्डा को अंदर लेना है पूरे मैट्रिक्स के अंदर, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर नाउ? ओके, ठीक है. मतलब हमें क्या ध्यान देना है, अगर एक मैट्रिक्स दिया है और अगर तुम्हें a माइनस लैम्डा आई निकालना है तो जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसमें से एक माइनस लैम्डा लिख दो, खत्म, और कुछ नहीं करना है. Whatever is your matrix, just subtract lambda from this. So 1 minus lambda minus 1 minus lambda. फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इक्वल टू 0 करना है, open the determinant and calculate the characteristic equation. Clear? Okay, so I'll go to the next. You will understand slowly because पहला lecture है तो it will take a little bit time, लेकिन हो जाएगा. Can I go to the next one? Yeah. Example 2. Find the characteristic. Yeah, all the DSC students, all the students, please write your attendance in the chat box. ID number, underscore division, underscore your name. The next question, find the characteristic equation of the matrix and hence find the matrix represented by this. A raised to 7 minus 4 A raised to 6 minus 20 A raised to 5 minus 34 A raised to 4 minus 4 A cube minus 20 A square minus 33 A plus R. हमें सबसे पहले क्या निकालना है? Find the characteristic equation of A. So we know that the characteristic equation in general is determinant of A minus lambda I. लेकिन यहाँ पे 3 by 3 दिया हुआ है,
तो we have a formula for 3 by 3 matrix. Agar the matrix is of 3 by 3, that is 3 rows and 3 columns, then we can calculate the characteristic equation by using a formula. This is a general formula. We can calculate by using this formula also, but for 3 by 3, this is the determinant. You have to open this determinant and simplify. But for 3 by 3 matrix, we are not doing this method. We are going to substitute in this formula. अगर ये 3 by 3 मैट्रिक्स है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इनटू लैम्डा स्क्वायर plus sum of the minors of the diagonal elements of A into lambda minus determinant of A equal to 0. तो सबसे पहले lambda cube ऑलरेडी है. sum of the diagonal elements, कितने diagonal elements हैं? 3 हैं, 1, 2 and 1. तो तीनों को ऐड करना है. 1 plus 2 plus 1. तो ये पहला वाला सेकेंड वाला टर्म हो गया. थर्ड हमको निकालना है sum of the minors of the diagonal elements of A. इसका निकालना है, नॉट इसका. ठीक है, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है उसमें से सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स एंड सम ऑफ द माइनर्स. तो हमें सबसे पहले हर एक डायगोनल एलिमेंट का माइनर निकालना है. उसके लिए पहला डायगोनल एलिमेंट 1 है यहाँ पे, तो वी विल कैलकुलेट द माइनर ऑफ द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1. ओके, दिस एलिमेंट 1 इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. ठीक है, ये अगर हम एलिमेंट लेंगे तो ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है. तो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, बाकी का डिटरमिनेंट निकालना है. तो इट इज 2 3 2 1. ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट 1 के लिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, बाकी जो बचे हैं उसका डिटरमिनेंट निकालना है. तो वी हैव 2 3 2 1. अभी इसका डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करना है. तो वी विल हैव 2 minus 6 दैट इज इक्वल टू -4. ओके, तो ये सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए. तो हमें सबसे पहला डायगोनल एलिमेंट लेना है, इसका माइनर निकालना है. नाउ वी हैव टू टेक द माइनर ऑफ द सेकंड डायगोनल एलिमेंट. सेकंड डायगोनल एलिमेंट इज 2, तो हमको निकालना है माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 2. अभी सेकंड का भी 2 कहां पे है? सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है. तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, बाकी का डिटरमिनेंट निकालना है. तो इट इज गोइंग टू बी 1 7 1 and 1. ठीक है, अगर हमने पहला लिया तो पहला रो और पहला कॉलम छोड़ना है. सेकंड के लिए सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ना है, बाकी जितने नंबर्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना है. तो दिस विल बी 1 minus 7 equal to -6. ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज 1. नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज 1. अभी इसका निकालना है, तो उसके लिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ना है, बाकी जितने नंबर्स है उसका डिटरमिनेंट निकालना है. तो कितना हो जाएगा? 1 में थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो अगर छोड़ा हमने तो बचता है 1 3 4 2. उसका डिटरमिनेंट निकालना है 1 3 4 2. तो कितना आ जाएगा? 2 minus 12 दैट इज इक्वल टू -10. ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना है. नाउ वी हैव गॉट लैम्डा क्यूब माइनस सम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं. माइनस हमने निकाल दिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए. इसका डिटरमिनेंट निकालना है. व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए? आइदर यू कैन यूज कैलसी एंड कैलकुलेट द डिटरमिनेंट, और यू कैन डू इट मैन्युअली. सो 1 into 2 minus 6 minus 3 into 4 minus 3 plus 7 into 8 minus 2. What is the value of this determinant? Division A, please unmute yourself, okay? Because I cannot see your chats. 35, ma'am. How much? 35. 35, okay. What about others? Yes, ma'am, 35. Right है, ठीक है, तो इक्वल टू 35. तो हमें क्या करना है? अभी ये इक्वेशन, रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड ओनली फॉर 3 by 3 मैट्रिक्स, नॉट फॉर एनी अदर मैट्रिक्स. ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, 1 plus 2 plus 1. तो ये हो जाएगा 1 plus 2 plus 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस
जितने भी हमारे माइनस के आंसर आए हैं उसको यहाँ पे सब ऐड करना है। तो -4, -6, -10 into lambda. Determinant of a 35 है, so -35 equal to 0. Simplifying, we'll get lambda cube minus 234. Then 20 lambda minus 35 equal to 0. This is the characteristic equation. You can also expand this determinant to get the characteristic equation, but for 3 by 3, this becomes easy comparatively. Any doubt? Okay, so we have got the characteristic equation lambda cube minus 4 lambda square minus 20 lambda minus 35 equal to 0. Now we have to find this matrix. So we have to find this matrix, this big matrix. We are going to apply, even though they are not told to apply the Cayley-Hamilton theorem, but we can apply Cayley-Hamilton theorem to any square matrix. Now A is a square matrix, so we can apply Cayley-Hamilton theorem. Cayley-Hamilton theorem में क्या होता है? लैम्डा के बदले a पुट करना होता है. तो we will get a cube minus 4a square plus minus 20a minus 30. जहाँ पे भी नंबर है लैम्डा नहीं है उसके साथ एक i आ जाता है. जहाँ लैम्डा है लैम्डा इज रिप्लेस्ड बाय a और जहाँ पे लैम्डा नहीं है वहाँ पे i आ जाता है. So we got this equation a cube minus 4a square minus 20a minus 35 equal to 0. So in the first problem, we have used this formula because it was a 2 by 2 matrix. Now here, since we have a 3 by 3 matrix, we can apply this. This formula is comparatively easier than calculating this big determinant. इसको directly अगर expand करोगे तो बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़े-बड़े terms आ जाते हैं. So you are bound to make mistakes. Just to avoid that, you can calculate this. Use this formula, or you can directly expand. Nothing wrong in that. So we have got now this equation. ठीक है? Now अभी हमें ये equation से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है? ये equation से जो हमारा Cayley-Hamilton theorem अप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है उसमें से हमें ये वाला मैट्रिक्स निकालना है. Okay? So what we will do is we will divide this matrix by this. We will divide this matrix by this. So hope this part is clear, DSC students. Yeah. So fine. So lambda cube minus. So remember this formula is applied only for a 3 by 3. I'm repeating again and again. Don't apply for any other order matrix. तो ये सब निकालने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला है. हम Cayley-Hamilton theorem states that अगर हम लैम्डा को a पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा. Okay. So now write this equation and divide by this. Since our aim is to calculate the value, it's a big value. We cannot calculate a raised to 7. बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला ये इक्वेशन यूज करके इसको छोटा कर देंगे. तो उसके लिए थर्ड माइनर डायगोनल -10 आ रहा है ना. थर्ड डायगोनल मतलब 1 है. तो हमें थर्ड रो और थर्ड कॉलम और थर्ड रो छोड़ना है. बाकी का जो वैल्यूज है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. So we got 1, 3, 4, 2, which is 2 minus 12, that is -10. ठीक है? Swastik. Okay. So now, what is that? Okay. So now we will divide this big matrix by this a cube minus 4a square minus 20a minus 35i. ठीक है? So in the next slide, I'm going to divide that just like a polynomial division. That day also we have done. Other students have done that. I'm repeating it again. यहाँ तक हो गया? I'm going to upload this. Don't worry. Okay. So in the next step, this was the given matrix. A raised to 7 minus 4 a raised to 6 minus 20 a raised to 5. ये तो given matrix था. Okay, this we are dividing by the Cayley-Hamilton वाला part. A cube minus 4a square minus 20a minus 35i. Okay, हमें ये बड़े मैट्रिक्स को ये वाले इक्वेशन से और ये वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है. ठीक है? तो जैसा हम लोग पॉलिनोमियल डिवीजन करते हैं वैसा ही करना है. अभी हमें यहाँ पे a raised to 7 चाहिए. यहाँ पे a क्यूब है तो यहाँ पे पहला टर्म क्या आएगा?
ए क्यूब के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें a raised to 7 मिलेगा? What will come there? Yes, you can unmute also, division A. Which term we have to multiply with a cube in such a way that we get a raised to 7? A raised to 4, correct. The first term ऊपर आ जाएगा a raised to 4. Now multiply this whole divisor by a raised to, तो कितना हो जाएगा? A raised to 7 minus 4 a raised to 6 minus 20 a raised to 5 minus 35 a raised to 4. ठीक है, पहला हमने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया तो a raised to 7, सेकेंड किया तो 4 a raised to 6, 20 a raised to 5 minus 35 a raised to 4. Yes. Now we have to, जैसे हम जैसा नॉर्मल डिवीजन जब करते हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हर एक के साइन चेंज करने हैं, तो आई एम चेंजिंग द साइंस. पहला नेगेटिव हो गया, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ आल्सो पॉजिटिव. जो भी सेकंड के साइंस थे हमने सबके साइन चेंज कर दिए. उसके बाद नाउ सब्ट्रैक्ट इट. सो a raised to 7 minus a raised to 7 0 minus 4 a raised to 6 plus, ये साइन प्लस हो गया तो plus 4 a raised to 6 will become 0. This also will become 0. We will have only this term. So we will have a raised to 4 minus बाकी जो है वो नीचे ले लेने का. हाँ, हेलो, if you have any doubt then you can unmute, otherwise keep yourself muted only. Yeah, so now what is the next number so that we get a raised to 4? हमको अभी ये वाला इक्वेशन आ गया ना, यहाँ पे a क्यूब है तो a क्यूब के साथ हमें किसी एक नंबर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सच वे दैट वी गेट a raised to 4. दैट टर्म इज a हियर, तो प्लस a, तो फिर से मल्टीप्लाई करना है, पूरे इसको a से मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल गेट a raised to 4 minus 4a क्यूब minus 20a स्क्वायर minus 35a. ठीक है, फिर से साइन चेंज करना है, सेकेंड वाले इक्वेशन का साइन चेंज करना है. पहला नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सो पहला नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव. अगेन a raised to 4 minus a raised to 4 0 minus 4a cube plus 4a cube 0 minus 20a square plus 20a square 0 33a minus 35a. तो ये हो जाएगा 2a और ये ऊपर का i नीचे आ जाएगा, तो we will get only 2a plus i. Okay, so now we cannot divide further because यहाँ पे a cube है और रिमाइंडर में a आ गया, so we cannot divide further. We have to stop with this. Okay, so what we are doing is whatever was the big matrix, given matrix, or this matrix value is to be calculated. So what we are doing is we are dividing this matrix by the Cayley-Hamilton left hand side, and then normal polynomial जो division करते हैं वैसे ही division करना है, and then we get the remainder as 2a plus i. फिर हमें क्या लिखना है? This dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, this is equal to divisor into quotient plus remainder. So the big matrix, this is equal to this matrix into this matrix plus the remainder. But we know from Cayley-Hamilton theorem this part is equal to 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा खाली this is equal to 0 from Cayley-Hamilton theorem. So we have the answer as 2a plus i. 2a plus i. ठीक है, हमने नॉर्मल डिवीजन किया, जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही दो मैट्रिक्स का डिवाइड किया हमने पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड से, एंड देन वी गॉट द रिमाइंडर एज 2a plus i. So we know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. But this part is equal to 0 from Cayley-Hamilton theorem. तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा खाली 2a plus i. तो अभी a को सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओनली 2a plus i. ये जो बड़ा मैट्रिक्स था दैट हैज रिड्यूस्ड टू ओनली 2a plus i. That is the advantage of Cayley-Hamilton theorem. We can calculate the higher degree matrices using the Cayley-Hamilton theorem. Because this is becoming 0, it reduces to a smaller matrix. ठीक है,
So now substitute for A and calculate the value of this matrix, the given matrix. Yeah, if you have any doubt, you can ask. $35 कहाँ पे? I multiplied by any matrix will become the same matrix. I के साथ जो भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आंसर आता है. ठीक है? I into a raised to 4 किया तो 35 a raised to 4 हो जाता है. 35 I into a किया तो 35 a हो जाता है. जो भी I को तुम जो भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम रहता है वहां पे. ठीक है? Any other doubt? नॉर्मल डिवीजन हमने किया है, रिमाइंडर निकाला है और वो लिखा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट द डिवाइजर पार्ट इज इक्वल टू 0 फ्रॉम केली हैमिल्टन थ्योरम, सो वी गेट द आंसर इज इक्वल टू 2a plus I. Now substitute for 2a. A matrix is already given in the problem. Substitute for A and calculate write the matrix form of 2a plus I. Write the matrix form of 2a plus I. Any doubt in this division? Okay, so what is the answer there? A के बदले substitute किया है, the given matrix I के बदले 1 0 0. Again, you multiply 2 throughout. हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है. तो पहले 2 को अंदर ले लेना, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 2 plus 1 3, 6 plus 0 14 plus 0 8 plus 0. पहले 2 को अंदर लेना, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके आंसर लिखना है. 3 6 7 is what? हर्ष, will give 3 by 3 matrix, right? 3 6 7 कहाँ से आया? 14 ना? 3 6 14, yes. Just check कर लो 8 5 6 राइट है कि नहीं. 2 को पहले अंदर लेना, उसके बाद ऐड करना है. तो 8 plus 0 4 plus 1 5 6 plus 0 2 plus 0 4 plus 0 2 plus 1 that is 3. Correct है ना? Yes. Now it is clear that we were not able to do in presentation mode, so that division was a little bit confusing. Hope it is clear now. ठीक है? Division A, any doubt? I cannot see your charts, that is why I am asking you. If you have any doubt, please unmute yourself, okay? Go to the next same type of problem. Verify Cayley-Hamilton theorem and hence find A inverse for A equal to 1 4 2 3. Hence find A raised to 5. Almost same as the previous one. Only thing here extra what you do is verify Cayley-Hamilton theorem. स्क्रीनशॉट लेना है. कौन सा स्लाइड नंबर बता दो, मैं उसमें जाती हूँ. पूरा सेकंड एग्जाम्पल का. सेकंड सेम का 1 सेकंड. तीन है ना, 3 स्लाइड्स में होगा शायद. ठीक है, ये ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले. You have to write, not take the screenshot. हाँ, घर बाद में लिखना है, तो समझ में नहीं आएगा. ठीक है, एक बार लिख के देखो, समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट.
सॉरी या आ गया थर्ड वन हो गया ये वाला या थर्ड ओके ट्राई टू फॉलो दिस एंड देन उसके बाद फिर तो ट्राई कर लो तो हो जाएगा समझ नॉट डिफिकल्ट समझ में आ जाएगा ओके so next one is again verify Cayley Hamilton theorem and find A inverse for A and also find A raised to 5 minus 4 वाला फिर से हमें Cayley Hamilton theorem अगर है या हमको ये निकालना है तो हमें we have to find the characteristic equation now we are given again 2 by 2 so we cannot use that formula lambda cube minus वाला so we have to calculate determinant of A minus lambda I equal to 0 okay अगर हमको a माइनस लैम्डा आई लिखना है तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से लैम्डा सबट्रैक्ट करना है तो 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा now calculate the determinant of this calculate the determinant of this so what is the characteristic equation we get determinant of a minus lambda I equal to 0 ठीक है इसको ओपन करना है और सिंप्लीफाई करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है if I open the bracket 1 minus lambda into 3 minus lambda minus 8 equal to 0 open this bracket again 1 into 3 1 into minus lambda open करना है पूरा bracket so we will get 3 minus lambda minus 3 lambda then minus lambda plus lambda square minus 8 is it okay the equation lambda square minus 4 lambda minus 5 pages. Great, with lambda not you have typed, very nice. Lambda square minus 4 lambda minus 5. ठीक है सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है सिंस वी आर गिवन 2 by 2 मैट्रिक्स we have to calculate the characteristic equation by calculating determinant of A minus lambda I equal to 0. So we have got this as the equation. Is it okay? All of you getting the same? Lambda square minus 4 lambda minus 5. Now we have to verify Cayley Hamilton theorem. तो हमें क्या करना है लैम्डा के वेरीफाई करना है मतलब हमको प्रूफ करना है okay या we not use Cayley Hamilton theorem we have to verify Cayley Hamilton theorem मतलब क्या है now replace lambda by a to prove replace lambda by a तो यहाँ पे हो जाएगा a square minus 4a minus इसका आंसर हमें 0 है करके प्रूफ करना है that is the verification part okay and when they ask you to apply then directly you can apply this here you have to prove that because they have asked verify Cayley Hamilton theorem तो हमें इसको प्रूफ करना है मतलब क्या है हमारे पास a है a square निकालना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है and show that it is a zero matrix okay a is already given तो a square कैसे निकालेंगे a into a multiply करें you can do it directly using calci also calculate a square सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद हमको लैम्डा को a रिप्लेस करना है एंड शो दैट इट इज इक्वल टू 0 व्हाई टू शो बिकॉज़ यू हैव टू वेरीफाई नॉट यूज केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है करके हम लोग को ये प्रूफ करना है सो उसके लिए पहले हमको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा a स्क्वायर कैसे निकलता है a into a तो कैलकुलेट a स्क्वायर
A square will be equal to, directly you can use calcium and calculate A square directly also. A है तो A square हो जाएगा. Is it okay? 9, 16, 8, 17. First row, first column. 1 into 1 plus 2 into 4, 9. 1 into 4 plus 4 into 3. Just check कर लो, this A square की value ये आती है क्या? Use calculate and check your answers. Yes है ना, ठीक है. तो अभी हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है. यस, सब्स्टिट्यूट करना है. A square minus 4A minus 5. ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन 0 0 0 0 आना चाहिए. तो नाउ पहले 4 को अंदर लेना है, यहाँ पे 5 को अंदर लेना है, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना. सो 9 minus 4 minus 5. फिर 16 minus 16 minus 0. 8 minus 4 minus 8 minus 0. चेक करो कि 0 0 0 आ रहा है कि नहीं. Getting 0 0 0. Okay. So we'll get the answer as 0 0 0. ठीक है, ओके. अगर इसका आंसर 0 0 0 हो रहा है मतलब केली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड. हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, लैम्डा के बदले a पुट किया, and when I replace lambda by a, if I get the answer as 0 0 0 0, which means that the Cayley Hamilton theorem is satisfied. तो पहला वाला पार्ट हो गया कि वेरीफाई Cayley Hamilton theorem. सेकेंड हमें क्या करना है? फाइंड a इनवर्स. Cayley Hamilton theorem is satisfied. Next we have to find a inverse. यहाँ पे तीन पार्ट दिए. एक तो है verify Cayley Hamilton theorem, find a inverse, and then find the value of that matrix given, a raised to something given. उसकी वैल्यू भी निकालनी है हमको. तो हमने सबसे पहले verify, this is Cayley Hamilton theorem verified. To find the a inverse, this was we've got from Cayley Hamilton theorem, a square minus 4a minus 5i equal to 0. ये पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है. ये इक्वेशन को a इनवर्स, जो भी हमारा आंसर आया केली हैमिल्टन थ्योरम से, उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है. तो व्हाट डू वी गेट? अगर मैंने a स्क्वायर को a रेज़ टू -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? a into a इनवर्स इज i into a इनवर्स इज a इनवर्स. तो हमको मल्टीप्लाई करना है, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स. A square into a raised to -1 is a. 4a into a inverse is I. And I into a inverse is a inverse. ठीक है, अभी यहां से हमें a inverse निकालना है. अगर 5a inverse को हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो बचेगा a minus 4i. And a inverse will become 1/5 into a minus 4i. Substitute for a, substitute for I, you will get the inverse of the matrix. हमने इनवर्स के बहुत सारे मेथड किए हैं, एडजॉइंट मेथड किया है, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी इनवर्स निकाला है. दिस इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग द इनवर्स बाय यूजिंग द केली हैमिल्टन थ्योरम. सो a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 a minus 4i. ठीक है, ये पूरे इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया. अगर हमें a रेज़ टू -2 निकालना है तो a रेज़ टू -2 से मल्टीप्लाई करना है. जो भी पूछा उसके हिसाब से हमको मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे a इनवर्स का टर्म आ गया, तो a इनवर्स के टर्म को एक साइड में रखना है, बाकी सब टर्म्स को दूसरी साइड में लेके जाना है और उसमें से a इनवर्स निकालना है. तो सब्स्टिट्यूट फॉर a एंड i. a इज द गिवन मैट्रिक्स, i इज द यूनिट मैट्रिक्स. सिंप्लीफाई करना है फिर से. -3 0. जस्ट चेक द इनवर्स वैल्यू. हर एक एलिमेंट चेक कर लो राइट है कि नहीं.
Is it okay? One minus four, which is minus three. 4 minus 4, 0. 2 minus 0, that is 2. 3 minus 4, which is minus 1. Correct. ठीक है? So we have got A inverse. तो second part हो गया. पहले हमने prove किया, verify Cayley Hamilton theorem. Yeah. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का 4 आएगा ना इंस्टेड ऑफ 0. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला 4. अच्छा हाँ राइट करेक्ट करेक्ट बिकॉज हियर वी हैव 4 minus 0 ना 4 minus 4 नहीं आएगा बराबर यस करेक्ट यू आर राइट वन सेकंड आई जस्ट चेंज दैट दिस इज 4 करेक्ट right now so minus 3 rest numbers are same okay minus 3 4 2 1 good right okay नेक्स्ट हमको क्या करना है थर्ड स्टेप में वो बड़े वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो अगेन डिवाइड सो डिवाइड दैट गिवन मैट्रिक्स बाय दिस पॉलिनोमियल सो नेक्स्ट स्टेप विल बी डिवीजन फिर से जो दिया हुआ है उसको हमें जो हमें केली हैमिल्टन थ्योरम से मिला है उससे डिवाइड करना है दिस इज द गिवन मैट्रिक्स नाउ दिस मैट्रिक्स इज टू बी डिवाइडेड बाय द केली हैमिल्टन थ्योरम इक्वेशन a raised to a square minus 4a minus 5 डिवाइड करो देखो क्या रिमाइंडर आता है चेक कर लो फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि a raised to 5 मिलेगा हमको we have to multiply by a raised to 3 so multiplying by a raised to 3 तो पहला a raised to 3 तो पूरे तीनों टर्म्स को a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a raised to 5 minus 4 a raised to 4 minus 5 I into a cube will become a cube तो ये आ जाएगा a raised to 5 minus 4 a raised to 4 minus 5 a cube उसके बाद हर एक का साइन चेंज करना है तो ये पहला वाला पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव सेकंड जो भी हमने लिखा है सबके साइन चेंज करने हैं एंड देन सबट्रैक्ट करना है उसको तो सबट्रैक्ट करना है अभी मैं जस्ट चेंजिंग द साइन मेन एम इज टू सबट्रैक्ट द फर्स्ट this minus this तो ये कैंसिल हो गया बचा ये 7a cube minus 7a cube plus 5a cube we will get minus 2a cube plus 11a square minus 6 अभी यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन में सेकेंड वैल्यू सेकेंड टर्म कौन सा आएगा अभी a स्क्वायर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना कि हमको minus 2a cube मिले A minus 2 बिकॉज यहाँ पे हमें a स्क्वायर है a स्क्वायर से हमें minus 2a क्यूब चाहिए तो minus 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना we have to multiply by minus 2a the reason is यहाँ पे 2 है जो भी फर्स्ट टर्म है वो टर्म यहाँ पे आना चाहिए when we multiply this ठीक है तो ये हो गया minus 2a क्यूब plus 8a स्क्वायर plus 10a ठीक है फिर से जो सेकेंड लिखा है उसका साइन चेंज करके लिख देंगे तो पहला हो जाएगा प्लस नेगेटिव नेगेटिव नाउ सबट्रैक्टिंग अगेन फर्स्ट टर्म विल गेट कैंसल 11 minus 8 3 minus 1 minus 10 that is minus 11 so 3a square minus 11a और ये वाला नीचे आ जाएगा ओके अभी किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई करना है अभी हमको a स्क्वायर से 3a स्क्वायर चाहिए so 3 से multiply that is you have to add plus 3 here okay we are having a square and here we are having 3a square तो अगर हमें a square से 3a square मिलना है तो we have to add plus 3 so plus 3i so plus 3i लिखा तो 3a square minus 12a minus 15i फिर से साइन चेंज करना है नेगेटिव पॉजिटिव सिंप्लीफाई so minus 11 plus 12 that is a and minus 10 plus 15 that is 5 ठीक है
So remainder is a plus. Now we cannot further divide because here it is a square and we have got a degree less than that. So we cannot divide further. Now again writing this equation is equal to this into this plus the remainder. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. वो लिखने के बाद a plus 5i की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. Okay, so first we'll write the step as this matrix is equal to this into this plus the remainder. But this part again it is equal to 0 from Cayley Hamilton theorem. तो again ये पूरा term 0 हो जाएगा. So we have only a plus 5i. बाकी सब 0 हो जाएगा, है ना? We will have only a plus 5i. Now substitute for a, substitute for I, and calculate the 2 by 2 matrix. Yeah. So अभी क्लियर. वेरीफाई है तो हमें लैम्डा के बदले a पुट करके 0 प्रूफ करना है. a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है वो इक्वेशन को, और अगर एक वैल्यू निकालनी है मैट्रिक्स उसको डिवाइड करना है. दैट्स इट. सब्स्टिट्यूट फॉर a and 5i, you will get the answer 1 4 2 3 plus 5 into 1 0 0 1. Add करना है. Tell me what will be the answer. So the answer is it okay? Just check कर लो. 6428. Yes, correct. 6428. ठीक है. So the final answer for this big matrix is reduced to now 6428. Because if we start calculating a raised to 5, बहुत बड़े terms हो जाएंगे. We can reduce this by using the Cayley Hamilton theorem concept. ये पूरा टर्म 0 हो जाता है तो इसीलिए it reduces only to a smaller matrix. Yes. One more we can take the same type and find a raised to -2. Again, it's a 3 by 3 matrix, so you can use the formula if you require. Otherwise, you can open the determinant anyway. Previous slide, okay. चेक कर लो, कुछ रॉन्ग है तो बताओ मुझे. As typing errors may be there, so please let me know if there are any mistakes. Previous slide. Oh, done, right? Darshana. Okay. So next slide. Yeah. So find the characteristic equation again. Now, what is question? Verify that the matrix satisfies the characteristic equation, or it's indirectly they have said verify Cayley Hamilton theorem. So either they will ask you to verify Cayley Hamilton theorem, or it is verified that the matrix satisfies the characteristic equation. So first step is to calculate the characteristic equation. Again, since we are having this 3 by 3 matrix, we can use this formula. Or we can calculate directly determinant of a minus lambda I. So tell me what is the minor of the first element? 1. Minor of the first element, first diagonal element 1. Okay, Harsh is saying 1. What about others? अगर हमें इसका माइनर निकालना है तो हमें ये रो छोड़ना है, ये रो छोड़, ये कॉलम छोड़ना है. फर्स्ट वन फर्स्ट कॉलम हैज टू बी
डिलीटेड, तो क्या बचता है -1 0 0 -1, इसका डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे ही डायगोनल एलिमेंट -1 है, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का निकालना है जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो छोड़ना है, बाकी का डिटर्मिनेंट निकालना है। माइनर ऑफ द डायगोनल एलिमेंट -1, क्या आता है आंसर? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ के -1 आता है, लेट्स चेक, 1 0 0 -1 दैट इज इक्वल टू -1, करेक्ट। अभी थर्ड डायगोनल एलिमेंट -1 लेना है, यस करेक्ट। सो नाउ 5 आ रहा है, तो हमको थर्ड कॉलम और थर्ड रो छोड़ना है, बाकी का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 1 2 2 -1 का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा -1 -4 which is equal -5 ना, -5, yes। डिटर्मिनेंट निकालो इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स -5, ओके, दैट इज डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? 3, ओके, चेक दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू, either use Cayley and calculate the value of determinant, or you can do it manually. Harsh is saying 3, what about others? I got the determinant value as 5. Just check that, is it right or not? 5 correct है? Okay. ठीक है, substitute everything in this equation and get the characteristic equation. तो कितना होगा? लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 1 -1 -1, तो वो हो जाएगा -1। फिर इन तीनों का सम निकल के यहाँ पे लिखना है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। व्हाट विल बी दैट? we will get lambda cube plus lambda square -5 lambda -5 equal to 0। पहले वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है मतलब लैम्डा को अगर हमने a पुट किया तो आंसर 0 आना चाहिए, लैम्डा को अगर a पुट किया तो आंसर 0 आना चाहिए। प्रूफ a क्यूब प्लस a स्क्वायर -5a -5i इक्वल टू 0। तो हमको निकालना है a तो दिया हुआ है गिवन प्रॉब्लम में ही, a स्क्वायर निकालना है, a क्यूब निकालना है, और सबको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है एंड शो दैट आंसर इज इक्वल टू 0। यू कैन ट्राई दिस एट होम, ठीक है? एक बार देखो प्रूफ, एक a स्क्वायर का मैट्रिक्स देखो क्या आता है, a is already given, calculate a square। We know I matrix, we know A matrix, we have to calculate A square and A cube, so A into A। Anybody has got A square? Either do it manually या फिर उसको कैल्सी में पुट करो एंड कैलकुलेट A स्क्वायर। A कैलकुलेट करो, उसको A स्क्वायर, A को डालो कैल्सी में, उसके बाद A स्क्वायर निकालो वहां से। I've got this answer, please check the answer। करेक्ट है? ओके। वैसे a क्यूब निकालना है, a स्क्वायर इंटू a या a इंटू a स्क्वायर। I got this, please check again। Please complete this because it's already 11 o'clock, you have to go for the next lecture। ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, जस्ट चेक दिस वैल्यूज, ओके? फिर पूरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आंसर 0 लाना है हमारा। We have put a cube, a square, a and I, इसका आंसर 0 आना चाहिए। I've got the answer as 0, please check whether I've
मेड सम मिस्टेक। उसके बाद a रेज टू -2 निकालना है। अगर हमें ये इक्वेशन से a रेज टू -2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे? प्री मल्टीप्लाई बाय विच मैट्रिक्स? अगर हमें यहां से a रेज टू a इनवर्स निकालना है तो हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर a रेज टू -2 निकालना है तो a रेज टू -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट्स इट। आई जस्ट सेंड दिस पीपीटी। a इनवर्स भी निकालना था क्या? ओके, a इनवर्स निकालेंगे तो ओके, इफ यू डू डायरेक्टली a रेज टू -2 multiply by a, you will get a raised to -1 here, which means that a raised to -1 is also to be calculated. Okay, a raised to -1 भी निकालना है, -2 भी निकालना है. Okay, just complete this, try this as homework. A raised to -2. Did you get your college mail ID, BSc students? Not yet, no? Okay, because once you get, then you can join the classrooms. I'm uploading the, we'll try to give it today so that you can join all the classrooms. Okay. Okay, so see you in the next lecture with the next topic. Thank you all. Bye-bye. Please don't forget to write your attendance.